Good morning, students. Today we are going to start the topic of demonetization. The topic is from Indian Economic Development, Chapter 3. We are actually dealing with. And the chapter is liberalization, privatization and globalization. Actually, the chapter is about July 91's policy. Okay, so let's talk about the topic demonetization. We will understand here, first of all, the simple meaning of demonetization. What was the objective behind demonetization and the advantages and disadvantages for the topic. Okay, let's start with the meaning. What is demonetization? It is an act to seize matlab to stop. It is an act to stop a currency unit or put an official stop on the status of the currency as a legal tender. मतलब जो लीगल टेंडर है उसको स्टॉप कर दिया जाता है, अब वो लीगल टेंडर रहेगा नहीं. जैसे कि 500 and 1000 के नोट्स आप लोगों को पता ही है. डिमोनेटाइजेशन मतलब ये दो करेंसीज जो हैं, ये दो नोट्स जो हैं, अब वो लीगल टेंडर नहीं है. ओके, stop the currency units or to put official stop on the status as legal tender. मतलब now no more these currency notes are having any legal status. Now, when was demonetization done? November 8, 2016. The government announced this historical measure. The two largest denomination notes of 500 and 1000, the largest denominations of 500 and 1000, उस समय के जो largest denomination ये दोनों notes ही थे 500 and 1000, okay, were demonetized with immediate effect. Okay, the government announced, the Prime Minister announced that these two notes are now no longer are the part of the legal tender. ऐसा करने से 86% of the cash in circulation was thereby rendered invalid. अब largest denominations हैं, okay, so अगर इन पे demonetize कर दिया जाता है, इन notes पे demonetization कर दिया जाता है, then 86% of the currency in circulation was considered as invalid. The notes were to be deposited in the bank by 30th December. हुआ कब demonetization? November 8 को 2016. So by December 30, जिन लोगों के पास भी ये करेंसी नोट्स हैं जो अब लीगल टेंडर नहीं है, वो डिपॉजिट कर देने हैं बाय 30th December. सो डिपॉजिट्स कर देने हैं. वाइल रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन कैश विड्रॉवल्स. अब कैश विड्रॉ करने में रिस्ट्रिक्शंस रखे गए थे. इजी है समझना. December 30 तक जितना भी करेंसी नोट्स है of 500 and 1000 which are no longer now the legal tender, okay, उनको डिपॉजिट कर देने हैं बाय 30th December. लेकिन विड्रॉवल पे रिस्ट्रिक्शंस रख दिया गया. नो, यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी एज मच एज यू वांट. देयर वर रिस्ट्रिक्शंस केप्ट ऑन द विड्रॉवल्स. लेट्स सी व्हाई demonetization was done. What was the objective behind the demonetization? Number one, the important objective behind the demonetization was to curb the corruption, to stop the corruption. Primarily, demonetization focused on only one thing, that corruption should be stopped, to stop the corruption. Okay, it was a step taken to stop the people from indulging into activities such as offering bribe or money laundering या एक्सेट्रा. ऐसे जब एक्टिविटीज, ऐसी जो भी एक्टिविटीज हैं जो इलीगल है, वो एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए, करप्शन को स्टॉप करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था. दैट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग डिमोनेटाइजेशन. दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकंड, टू कंट्रोल काउंटरफीटिंग. What is that? In short, एक वर्ड में अगर मुझे कहना है तो उसका मतलब है फेक करेंसी. सिंपली मीन्स फेक करेंसी को कंट्रोल करना. फेक करेंसी भी थी, you know, duplicate notes and all that. That is fake currency. Through demonetization, government aimed to stop the fake currency in the circulation. अब देखो, अगर 500 and 1000 के नोट्स गवर्नमेंट बंद कर देती है, तो जिनके पास भी फेक करेंसी है वो भी नो लॉन्गर लीगल टेंडर ही कहलाएगा. Okay, so that is of no use now. So the first objective behind the demonetization was to stop the corruption. Second,
to control the fake currency. 3, to stop use of currency for illegal activities. बहुत बड़ा point है ये, okay? Illegal activities, terrorist activity जो बहुत बढ़ गई, okay? उसको stop करने के लिए ये step जरूरी था, okay? Another major reason to explain the move of demonetization and its suddenness. हाँ, डिमोनेटाइजेशन किया गया, लेकिन कैसे किया गया? सडन डिमोनेटाइजेशन। इससे क्या हुआ? जो भी इलीगल एक्टिविटीज थी, टेररिस्ट एक्टिविटी को फाइनेंस जो भी दिया जाता था इन नोट्स के जरिए, फेक नोट्स के जरिए या जो भी है, ओके, दैट केम टू एन एंड। ओके, सो 3 ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द डिमोनेटाइजेशन। 1, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू कर्ब द करप्शन। 2, फेक करेंसी को कंट्रोल करने के लिए। 3, इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको भी स्टॉप करने के लिए। To stop accumulation of black money and bring it back to the economy. Accumulation of black money, बिना टैक्स पे किया हुआ जो भी पैसा है, that is black money. अब उसको स्टॉप करने के लिए डिमोनेटाइजेशन बहुत जरूरी था, ओके? एंड टू ब्रिंग द मनी बैक टू द इकोनॉमी, ब्लैक मनी को स्टॉप करके दिस स्टेप वाज टेकन, डिमोनेटाइजेशन। ब्लैक मनी इज बेसिकली द अनअकाउंटेड मनी। सिंपल, ब्लैक मनी मतलब क्या? इट इज अनअकाउंटेड, जिसका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं है। एंड अकाउंट मेंटेन नहीं है तो इसके ऊपर टैक्स भी पे करना नहीं है, तो टैक्स इवेजन हो गया, टैक्स की चोरी हो गई, अनअकाउंटेड मनी है इसीलिए। एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर एंड द इनकम इवेडेड फ्रॉम द टैक्स, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट को लॉस है, ओके? तो ये स्टॉप करने के लिए अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी जिनके भी पास है, ये स्टॉप करने के लिए demonetization किया गया। On and all, we have seen 4 points, 4 objectives of demonetization. Okay, the last point is here to stop the accumulation of black money and bring it back to the economy. 3 point पहले जो हमने देखे वो था to stop the corruption, to control the fake money, and one more topic we have seen, that was, yes, to stop the currency for the illegal activities. Okay, now let's move to the next topic, features of demonetization. The first, tax administration के लिए। Let's see what is this topic. Demonetization of large denomination. Large denomination मतलब 500 and 1000 जो है वो large denominations हैं उस समय थे, okay? So demonetization of large denomination is not exactly the demonetization of black money. See, demonetize क्या करना है? Black money को demonetize करना है, इसलिए demonetization किया गया, okay? Demonetization of large denomination is not exactly the same as demonetization of black money. Okay, black money को ही हमें demonetize करना है, large denominations को demonetize करना, दोनों में difference है। What the government wants through the topic of demonetization कि जो भी black money है वो demonetize indirectly हो जानी चाहिए। Some cash holdings were perfectly white. कुछ लोगों के पास जो 500 and 1000 के नोट्स थे, they were perfectly white. उन पे उन्होंने टैक्स पे किया हुआ है, that is perfectly white. Okay, some of the cash holdings were perfectly white, the fruit of income upon which the tax has been paid. उन पे टैक्स पे किया हुआ है और had been applicable in the first place में क्या मतलब एग्रीकल्चरल इनकम जो भी है उन पे टैक्स है नहीं, तो वहाँ पे एंड जो लोग टैक्स पे करते हैं वो जो डिनोमिनेशंस है 500 and 1000 वाले वो टोटली वाइट हैं। अब बाकी जो ब्लैक मनी जिनके पास है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? लेट्स सी हियर 3 प्रॉब्लम्स दे माइट हैव फेस्ड। ब्लैक मनी फेस 3 डिफिकल्टीज। लेट्स सी 1, डिक्लेयर द अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे द टैक्स विद पेनल्टी। जिनके पास भी अनअकाउंटेड मनी है वो अपनी अनअकाउंटेड मनी को डिक्लेयर करें एंड टैक्स पे कर दे विद पेनल्टी। एक उनके पास ये सॉल्यूशन है। सेकेंड, कंटिन्यू टू हाइड इट। ओके, ब्लैक मनी जो है वो हाइड करते रहो। अब हाइड करने का भी कोई मतलब है नहीं, बिकॉज इट वॉज नो लॉन्गर लीगल टेंडर एंड कन्वर्टिंग द ओल्ड नोट देयर बाय सफरिंग द टैक्स रेट ऑफ 100%। 100% लॉस ही है इस केस में उनका। ओके, अगर वो अपनी अनअकाउंटेड मनी शो करते ही नहीं है देन 100% लॉस है उनका। थर्ड, launder their black money and paying a cost of converting black into white. हाँ, कुछ लोगों ने ये भी किया था, अपने पास जो ब्लैक मनी है वो कुछ परसेंटेज या कुछ कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में वन और द अदर इलीगल वे से कन्वर्ट कर लिया। ओके, ये 3 रास्ते ही हैं। 1, अनअकाउंटेड मनी को डिस्क्लोज करो, टैक्स पे करो पेनल्टी के साथ। 2, अनअकाउंटेड मनी डिस्क्लोज ही ना करो तो उनका तो 100% लॉस ही है।
थर्ड, जिनके पास ब्लैक मनी है वो अपनी ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते थे वाइट में, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ समथिंग, एंड ये एक तरह का इलीगल एक्टिविटी ही है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड, कंट्रोल ऑन ब्लैक मनी। टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी will no longer be tolerated or accepted as an inevitable part of life. Government told that tax की जो चोरी है, tax evasion जो है, that won't be now acceptable under any sense. Since this action has commanded support amongst the population, demonetization shows that black money will no longer be tolerated by the wider public either. The second feature here says that black money जितने लोगों के भी पास है, that won't be tolerated anymore. Okay, so control on black money was done. Okay, now third point is very important to understand. Credit creation होने लगा। Black money जो बैंक में आ रहा था, यहाँ 500 and 1000 के नोट्स, ये बेटर रहेगा, 500 and 1000 के नोट्स जो बैंक में आ रहे थे, उससे क्या होने लगा? क्रेडिट क्रिएट होने लगा। लेट्स सी क्रेडिट कैसे क्रिएट होने लगा। सिंपल, beyond reducing tax evasion, demonetization will have other far-reaching effects. For example, it will channel savings into formal system. अब देखो, घर पे अगर कोई पैसा रखता है, ओके, तो वो कोई मार्केट में जाएगा ही नहीं। इट इज नॉट एक्चुअली अ फॉर्मल सिस्टम। बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर पैसा डिपॉजिट होता है तो ये फॉर्मल सिस्टम कहलाएगा। अब लीगल टेंडर नहीं है, इसलिए लोगों को क्या करना पड़ा? सभी नोट्स को है उनको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा। अब बैंक में डिपॉजिट करना, उसका मतलब क्या है? ये फॉर्मल सिस्टम में आने लगा, फॉर्मल सेक्टर में आने लगा। विदाउट डाउट मच ऑफ द कैश हैज बीन डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम। सब लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, बिकॉज घर में रखने से कोई फायदा है नहीं, बिकॉज लीगल टेंडर तो है नहीं। सो एवरीवन स्टार्टेड डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक। ओके, इन अगेंस्ट डिपॉजिटिंग द मनी, कैश विड्रॉवल्स पे लिमिट रख दिया गया। अब विड्रॉ तो इतना नहीं हो सकता है, उसके लिए लिमिटेशंस थे। सो एवरीवन स्टार्टेड डिपॉजिटिंग द होल मनी विद देम इन द बैंक एंड विड्रॉवल्स पे लिमिटेशन रख दिया गया। अब हुआ क्या? सप्लाई मार्केट में मनी का बढ़ गया, द सप्लाई इंक्रीज्ड इन द मार्केट, बट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट्स विल श्योरली रिमेन इन द मार्केट। ओके, कुछ लोग वापस विड्रॉ कर रहे थे धीरे धीरे और वापस बाद में विड्रॉ करने लगे, लेकिन सम ऑफ द मनी विल श्योरली रिमेन इन द बैंक because people won't take no chance again कि घर पे रखे and etc. steps होंगे etc. So people started depositing the money in the bank, and the money remained with the bank itself. Some of the new deposit will surely remain in the bank, where they will provide a base for bank to provide more loans. Okay, now ultimately what happened? Money when remains with the bank, okay, then bank can give more loan to the people. Credit flows in the market and the loans can be provided at a cheaper rate too. Next, cashless economy, very important point. With large denominations eliminated, households and firms began to use the electronic transactions, payment methods, okay, जिससे economy कैसी हो गई? Cashless. They started using electronic modes to transfer or to pay the money. Okay, now in contrast, digital transaction face significant impediments. कुछ hurdles तो थे ही इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में जाने के लिए। ओके, कैशलेस इकोनॉमी में जाने के लिए क्या क्या hurdles है देखे। ओके, जैसे कि they require cell phones, point of sales machines are required with the merchants, so that when you go, you can pay the money at that time cashless, which depends on availability of internet connectivity also, so that was also important in that case. And they bring people into the formal economy, thereby increasing the financial savings and reducing tax evasion. अब अगर ये स्टेप हो जाता है, कैशलेस इकोनॉमी पूरी हो जाती है, then ultimately what will happen? टैक्स इवेशन नहीं होगा, टैक्स की चोरी होगी नहीं, because the record will be with the government, the amount that you are paying if cashless economy is there. Okay, so that is one more feature. Let's talk about the advantages. If you are clear with the topic that we have dealt with till now, you've seen the meaning, you've seen the features, we can draw out the advantages and limitations from those topics only. First, black money abolish करना सबसे बड़ा advantage. The step taken by the government to abolish black money from the economy, as holders were in a position to deposit the same. क्या करना होगा सब लोगों को? Deposit the money in the bank. Okay, घर पे रखने से कोई फायदा है नहीं, because legal tender है ही नहीं, तो सबसे बड़ा advantage यही हुआ, सब लोगों ने पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में, इससे क्या हुआ? ब्लैक मनी अबॉलिश हो गया। सेकेंड एडवांटेज, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेंथन हो गया।
कैसे? बैंक के पास फ्लो आ गया पैसों का, डिपॉजिट ज़्यादा हुआ, विड्रॉवल्स पे लिमिट था, तो जो पैसा बैंक में है ब्लैक मनी कर्व हो गया। ओके, नाउ ये हमने फीचर में देखा था, फीचर्स में दैट इट इंक्रीज्ड द सर्कुलेशन, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने लगा, लोन्स लो रेट पे मिलने लगे। ओके, द स्टेप लेड टू मोर अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन सेविंग्स एंड करंट अकाउंट, ज़्यादा पैसा डिपॉजिट होने लगा बैंक के पास, करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में पैसा ज़्यादा आने लगा। दिस एनहेंस द लिक्विडिटी, बैंक की लिक्विडिटी बढ़ गई। You know, they can easily handle the transactions now, which could be utilized for further lending purpose. लोन देने के लिए वो यूटिलाइज हो सकता है, लिक्विडिटी बढ़ गई बैंक के पास, तो now it can be used for lending purposes. टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आने लगा। This initiative led higher tax collection, no, as businessmen were depositing cash lying with them. अब कुछ बिजनेसमैन के पास अपने पास ही घर पे या कहीं कोई अदर सोर्स पे पैसा डिपॉजिट रहता था। Now businessmen started depositing the money in the bank. Okay, so now the government have the proper what you call accounts with them. जो पहले unaccounted money था, अब वो unaccounted money नहीं है, because people started depositing the money. Now government can easily have the 10% tax from the business people. Tax evasion could also be checked. Now tax की अगर चोरी होती है तो वो भी government can easily check. Government could use this as tax revenue. अब government के पास जो टैक्स का पैसा आता है वो government कहाँ यूज करती है? अल्टीमेटली वेलफेयर के लिए ही यूज करती है। ओके, टैक्स इवेशन अगर होता है तो गवर्नमेंट कैन नॉट यूज द मनी, ओके, एज रेवेन्यू फॉर द पीपल, फॉर द वेलफेयर। नाउ इट्स इजी, नाउ इट्स पॉसिबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, द टैक्स रेवेन्यू वाज यूज्ड। रियल स्टेट में प्राइस कट हुआ, ये भी एक एडवांटेज है। ब्लैक मनी की वजह से रियल स्टेट में हाइक आने लगा था, हाइक ही था ऑलरेडी, है ना, बिकॉज अनअकाउंटेड मनी है तो वो छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ते अपनाने ही पड़ते हैं, जिसमें से एक रियल एस्टेट है। ओके, पीपल स्टार्टेड डिपॉजिटिंग और इन्वेस्टिंग द मनी इन द रियल एस्टेट, ब्लैक मनी है वो, जिसकी वजह से क्या हुआ? द प्राइसेस इंक्रीज्ड। It is general observation that the hike in the real estate prices is because of circulation of black money. Hike क्यों था? Because of black money. Black money को छुपाना तो है ही. Okay, so this was the proper and the good source to hide the money. Real estate experienced price cut because of circulation of black money. अब black money stop हो गया, तो जो hike था real estate में वो to some extent came down. That's an advantage. Okay, next. Corruption started controlling. If this initiative by the government is able to curb the corruption and red tapeism, Indian market being the preferable market for foreign investment. Very good point. अब देखो टैक्स की चोरी कम हो गई, ब्लैक मनी मार्केट से निकल गया एंड करप्शन भी कम हो गया, जिसकी वजह से हुआ क्या? अब होगा क्या? एडवांटेज क्या है फ्यूचर में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अट्रैक्ट होगा, बिकॉज रेड टैपिज्म करप्शन अब है नहीं। नो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट कमिंग इन आवर कंट्री मोर। Cashless economy, the drive targeted the Indian economy to become cashless. The government succeeded in encouraging people to use digital modes. No, what happened now? People started using the digital modes. No doubt, इनके लिए they should have the internet connectivity, point of sales merchant के पास होने चाहिए. But still, to some extent, the things have started improving in our country. Okay, so that's an advantage that people move themselves towards the cashless economy also. Now let's talk about the disadvantages. सबसे बड़ा impact कहाँ आया? Primary producers, informal sectors. Okay, देखें क्या impact आया यहाँ पे. Producers in primary sectors and informal sectors face tough time. Reason क्या है tough time उनको face करना? Why they were facing the tough times? Because they were basically mostly dealing in cash only. ओके, प्राइमरी सेक्टर्स में जो हैं या इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो लोग हैं वो डील कर रहे थे सिर्फ कैश में ही। अब ड्यू टू लैक ऑफ करेंसी फ्लो, मार्केट में पैसे सप्लाई कम थे, दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम बिकॉज दे वर ऑलरेडी डीलिंग इन द कैश ओनली। ओके, अब हुआ क्या? दे वर ऑफर्ड लेस प्राइस बाय द बायर्स। अब पैसे मार्केट में कम है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं वो कैश ट्रांजेक्शन ही करते हैं। ओके, उनके पास इतना कोई सोर्स एंड दे वर आल्सो नॉट दैट मच aware about all these sources. Okay, so what happened? The buyers started paying less money, offering less money to them. Lack of knowledge of use of cash, digital cash, both by some buyers and sellers. This become a drawback. Buyers के पास भी इतना knowledge नहीं है, जो seller है उसके पास भी knowledge नहीं है digital cash का, जिसकी वजह से मार्केट में ऑलरेडी पैसा कम था एंड दे
but given less money. Okay, यहाँ प्राइस जो है उतना उनको नहीं मिला. बर्डन बैंक एम्प्लॉइज पे 100% बढ़ गया. दैट्स वेरी ट्रू. कैसे बर्डन बढ़ गया? देखिए, पता ही होगा आप लोगों को, लंबी लाइनें, डिपॉजिट के लिए, विड्रॉल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, then only the money can be withdrawn and all that. Many issues were there. Demonetization drive puts an excessive burden on the bank employee because they have to face this difficult situation and limited time period में ये सब खत्म करना था. हमने देखा था 30 दिसंबर से पहले जितना भी 500 and 1000 का नोट्स जो सर्कुलेशन में है वो सब आ जाना चाहिए था. The hurdle was there कि within this time period everything should be done. Okay. Now bank employees were involving in multitasking work. Okay, जो इनका एक स्पेसिफिक काम था वो छोड़ के मल्टीटास्किंग भी करना पड़ा था. Checking the forms, identity proofs, old notes की verification, and giving exchange, new currency also, but that was in a limit only. But still, the work of the employees was much, more as compared to earlier, which they were doing actually. Demand कम हो गई. Let's see why. This drive led to the fall in demand of the products. Okay, where black money supports. There was fall in the demand as holders of black money demanded less amount of goods and services. जो भी black money पहले जिनके पास था, they were demanding for the goods because they were having black money, and black money spend करने में also they were not hesitating. But now black money उनके पास रहा नहीं, so they started decreasing their demands, which affect the market also from one viewpoint. So lack of demand or less fall in demand is the limitation. Okay. One more topic in limitation, to higher cost of printing new currency. The government has to face this problem. Currency कुछ समय में print out कर देना, that was a huge burden on the government also. Destruction of old currency and printing the new currency involves huge cost. जो actually government को borne करना पड़ा currency printing का cost, and entire black money, last disadvantage, entire black money है वो target नहीं हुआ. बिकॉज अनअकाउंटेड मनी है, वो कुछ लोग हेजिटेट कर रहे थे शो करने के लिए, उनको ये डर था कि अगर कुछ एक्शंस लिया जाएगा उनके ऊपर तो, सो कुड नॉट टारगेट द एंटायर ब्लैक मनी. दिस मूव डिड नॉट टारगेट द एंटायर ब्लैक मनी बिकॉज पीपल हु हैड नॉट केप्ट कैश एज देयर ब्लैक मनी एंड हैड हेल्ड इन अदर एसेट्स लाइक रियल एस्टेट्स एंड गोल्ड वर नॉट अफेक्टेड एट ऑल. कुछ लोगों ने जो अपना ब्लैक मनी है गोल्ड में कन्वर्ट करके रखा था, या कुछ लोगों ने जो अपना ब्लैक मनी रियल एस्टेट में कन्वर्ट करके रखा था, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ. ओके, सो अल्टीमेटली नो डाउट वो पैसा किसी और के पास तो गया ही है, बट द पीपल जिनको अफेक्ट होना था उनको इतना अफेक्ट हुआ नहीं. सो यू कैन से द टारगेट जो था ब्लैक मनी का पूरा कर्व करने का वो हुआ नहीं. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.